Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are also preparing pretty well for the upcoming examinations, and you have already watched the previous two sessions which I have uploaded earlier. If you have not watched it, I will provide the link of those videos in this description box so you can check it out. And if you like my efforts, you can hit the like button and do subscribe my channel for more such videos. So in this video we will discuss plant biotech, because in plant biotech so many questions are asked in DBT. Specifically in plant biotech we will be discussing TI plasmid, because बहुत सारे इससे क्वेश्चन आते हैं. So many questions are asked from agrobacterium related to the TI plasmid, the different genes available in the plasmid and their role, and also from the vir genes. Vir genes के भी ऊपर बहुत सारे questions आते हैं. So I will brush up all these topics in this single video. So watch till the end and do include all the short notes in your notes to revise properly. So for plant biotech, you can refer these two books: Introduction to Plant Biotech by H.S. Chawla and Molecular Biotechnology Principles and Application by Glick. ये दोनों books अगर आपको चाहिए तो I will provide the link. If you want these two books, you can also comment me. I will provide in the Telegram group, because इन दोनों book में ही आपको ये सारा कुछ topic मिलेगा. Now coming back to the plant transformation with the TI plasmid of A. tumefaciens. So first of all, question can be asked that whether agrobacterium is a gram positive or gram negative. So basically it is a gram negative soil borne pathogen. It is a phytopathogen. It infects the plants. So it is used, this potential of this bacteria is used to genetically transform a plant cell with our gene of interest. Suppose a certain plant is there. If it is a plant and you want to insert your gene of interest, let's say you want to insert a drought tolerant gene. Drought tolerant gene you want to insert, so you can use this bacteria, its TI plasmid, to transfer the gene of interest into any bacteria of your interest, because it has the ability that it can transform the plants. It has the TI plasmid in which you can insert your gene of interest, and if that bacteria will infect that pathogen, your gene will be automatically inserted into the plant. So this is used to transform the plant cell, and this genetic transformation leads to the formation of crown gall tumors, which is known as the unlimited proliferation of cells. So you can see here crown gall tumor. This solid tumor can be observed, which is nothing but a crown gall tumor. This tumor shows the unlimited cell proliferation, which interferes with the normal growth of an infected plant. This agronomically important disease affects only dicotyledonous plant, including grapes, stone fruit, trees, peaches and roses. So आपको यहाँ से बहुत सारे points मिले हैं DBT के लिए. कौन कौन से points मिले हैं? That agrobacterium is a gram negative one. It can transform the plant cell and it causes the crown gall tumor, and it specifically infect the dicotyledonous plants. So you can see here, if any plant is introduced with any kind of physical injury, so then it will release some substances which is then sensed by this agrobacterium tumefaciens, and then this tumefaciens introduces a very unlimited plant cell proliferation, which is in the form of crown gall tumor. So now next, plant transformation with the TI plasmid of A. tumefaciens. So crown gall formation is the consequence of unlimited cell proliferation, and which is due to the transfer, integration and expression of a gene of a specific segment of bacterial plasmid DNA called the tDNA. यानी जो भी प्लांट में डिजीज ये करा रहा है, इट इज़ अ फाइटोपैथोजन, इट विल कॉज द क्राउन गॉल ट्यूमर. सो हाउ इट causes the crown gall tumor? It introduces a part of it plasmid. I will show you the plasmid also. So अपने ये जो अगर plasmid है TI plasmid, so TI plasmid का tDNA ये पूरा ट्रांसफर कर देता है, and tDNA has so many segments which we will see, and it causes the tumor in the plant. So this is the tumor inducing plasmid which is carried by most strains of the A. tumefaciens. Now depending on the TI plasmid, the length of the tDNA region is approximately 10 to 30 kilobase pairs. So you have to remember 10 to 30 kilobase pairs का होता है क्या? tDNA. So you have to remember this.
And apart from that, strains of A. tumefaciens that do not possess a TI plasmid cannot induce crown gall tumor. So for phytopathogenicity, the TI plasmid is the essential substance which is required in the plasmid of the A. tumefaciens. So यहाँ से भी बहुत सारे पॉइंट्स हमें मिले, TDNA का साइज मिला, यानी कि किसी भी स्ट्रेन में अगर TDNA नहीं है सो इट विल नॉट कॉज क्राउन गॉल ट्यूमर, बिकॉज जो जीन है जो सेल को प्रोलिफरेट कराने में रिस्पॉन्सिबल है, जो ऑन्कोजीन्स है, इट इज विद इन दिस TDNA रीजन. सो लेट्स सी. सो सबसे पहले देखते हैं इनिशियल स्टेप क्या होता है. जैसे कि मैंने बताया, द इनिशियल स्टेप इन द इन्फेक्शन प्रोसेस इज द वुंड, यानी कभी भी प्लांट में कोई फिजिकल इंजरी होती है दैट रिलीजेस सम काइंड ऑफ सब्सटेंसेस विच इज सेंस्ड बाय द बैक्टीरिया. So after the initial attachment step, A. tumefaciens produces a network of cellulose fibrils that bind the bacterium tightly to the plant cell surface. Originally, it was thought that A. tumefaciens infect wounded plant because the physical barrier of the cell had been breached by injury, thereby facilitating entry of the bacterium. जैसे मैंने मेंशन किया था, जैसे ही प्लांट में कोई इंजरी आ रही है, ये प्लांट है, ये अगर हमारा प्लांट है, सपोज कि यहाँ पे इसको सर्टेन काइंड ऑफ इंजरी आई है, इट विल रिलीज सम सब्सटेंस विच विल बी सेंस्ड बाय द A. tumefaciens. एंड वहाँ से क्या रिलीज होता है, व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस आर रिलीज्ड. So phenolic compounds are released such as acetosyringone, hydroxoacetosyringone, and also another substances which are secreted by the wounded plant. and ये कौन सेंस करेगा, ये A. tumefaciens इसको क्या करेगा, सेंस करेगा. नाउ उसके बाद क्या होगा, द स्मॉल मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग acetosyringone, hydroxysyringone act to induce the virulence gene that are carried on the TI plasmid. जैसे ही हमें ये phenolic compounds दिखे, acetosyringone, hydroxysyringone, this will induces the vir genes to bind to it. They are present in the TI plasmid. So now this is the whole plasmid of which bacteria? Agrobacterium tumefaciens. So it has vir genes. You can see here it has vir genes. It has opine catabolism gene and it has origin of replication, as every plasmid has its own origin of replication. And this segment is known as the tDNA. This is the left border. This is the right border. It has auxin synthesis gene, cytokine and opine. So all these are present in the tDNA. I have already mentioned the length of the tDNA. So this is the structure of the tumor inducing plasmid of Agrobacterium tumefaciens. So the vir genes are located on a 35 kilo base region of the TI plasmid that lies outside the tDNA. Now again an important one, कि जो vir genes है वो outside of tDNA रहता है, opine catabolism is outside of tDNA, and opine synthesis gene is present within this tDNA region. All these three questions will be definitely asked in every exam like CSIR, GATE, or even if we are preparing for DBT, this is totally important for you. हमेशा पूछा जाता है कि कौन सा gene, every time it is asked that which gene is present within the tDNA and which gene is present outside the tDNA. So virulence gene and opine catabolism gene is present outside the tDNA, and in the tDNA you can get auxin, cytokinin, opine synthesis gene within the tDNA. So a total of 25 vir genes are present in 7 operon on the plasmid. The product of the vir genes are essential for transfer and integration of the tDNA region. vir gene ही क्या कराता है, सबसे पहले जो phenolic compounds लीच होते हैं उसे सेंस करता है, एंड आफ्टर दैट जो ट्रांसफ़र है पूरा tDNA का, यानी कि लेफ्ट बॉर्डर से राइट बॉर्डर का, उसे क्या करता है, फैसिलिटेट करता है. सो विदाउट दिस vir gene it is not possible to transfer and integration of the tDNA region into the genome of the plant cell. Now this important part, the opine catabolism gene is on the TI plasmid and not part of the tDNA region. As I have mentioned, opine catabolism gene कहाँ है, outside है tDNA के, so you have to take care of it. and जो opine synthesis gene है वो present कहाँ है, वो tDNA region में present है. Now an important part, the condensation product of arginine and pyruvic acid is called octopine. ये भी पूछ सकता है because there are different kind of opine in the plants. So you can check it out कि arginine and pyruvic acid से बनता है तो वो octopine होता है, arginine and alpha ketoglutaraldehyde से बनता है तो वो होता है nopaline. So agropine is a bicyclic sugar derivative of
glutamic acid. So you have to remember octopine, nopaline and agropine. Now this octopine and nopaline, the most two common opine synthase gene, are present in the tDNA of Ti as well as Ri. Ri is for root inducing plasmid of agrobacterium. So the presence of opines in any plant material clearly indicates the transformed status of the plant cell. Now see, if any plant has opine synthesis gene, then what does it infer? It infer that the plant is transformed with the Ti plasmid, क्योंकि Ti plasmid में ही तो है opine synthesis gene. So opine synthesis gene यानी कि octopine nopaline किसी plant में अगर show हो रहा है, it shows that it is transformed by the Ti plasmid. Opine can be detected in some cases before the appearance of visual symptoms related to the transformed status of the plant material. You can also trace the opines through different biochemical tests. Now, opine synthase gene in principle constitute good reporter genes since no natural equivalent to their gene product has been found in plant cell. Because opine synthesis gene जो होते हैं वो रिपोर्टर जीन्स होते हैं उनके पास में, यानी यू कैन ऑल्सो ट्रैक दैट जीन कि क्या प्लांट में वो जीन है या नहीं है, एंड थ्रू दैट यू कैन ट्रैक कि वो प्लांट ट्रांसफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि विजुअल सिम्टम्स आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है. सो यू कैन ट्रेस थ्रू दी ओपाइन सिंथेसिस जीन कि वो जो प्लांट है वो ट्रांसफॉर्म हुआ है या फिर नहीं हुआ है. सो दिस इज दी summary of how Agrobacterium tumefaciens transform a host genome. So firstly, activation of protein by plant phenolics. So firstly, activation of protein by plant phenolics. सबसे पहले जो ये phenolic compounds release होते हैं इंजरी के बाद, that was detected by the Vir-A protein associated with the bacterial cell membrane. Bacterial cell membrane में Vir-A protein associated होता है. सो ये विर ए प्रोटीन क्या करता है, फिनोलिक कंपाउंड्स को डिटेक्ट करता है. देन इट फॉस्फोरिलेट दी विर जी प्रोटीन. इट मीन सबसे पहले विर ए क्या करता है, सेंस करता है फिनोलिक कंपाउंड्स को. देन इट फॉस्फोरिलेट्स दी विर जी को क्या कर रहा है, ये फॉस्फोरिलेट कर रहा है. एंड आफ्टर दैट दिस एक्टिवेशन ऑफ विर जी प्रोटीन activates the promoter of other vir genes. यानी you can see here ये vir A, vir G, उसके बाद सारे ही vir आपके activate हो जाते हैं. So this is the summary of how a plant transformation is done with Ti plasmid of A tumefaciens. Now I will also let you know the exact role of each vir gene because it will be definitely asked in your exam. So this table is very much important because it has the role of all the vir genes and in the same sequence in which it is activated. Because firstly the vir gene is activated, it senses the what? It senses the phenolic sugars which is leaching in the plant after a physical injury. So the vir A product, where it is present in the periplasmic membrane protein that senses specific phenolic compounds like acetosyrenzone and hydroxyacetosyrenzone by the wounded plant cell. And Vir A protein also interact with protein encoded by CHVE gene present on the bacterial chromosome, and it is important for binding of sugar co-inducers. The presence of phenolic sugar inducers present in the autophosphorylation of Vir A, which then transfer the phosphate group to Vir G protein, thus activating Vir G gene. So you have to remember, सबसे पहले पेरीप्लाज्मिक मेम्ब्रेन प्रोटीन में Vir A होता है. It will sense the phenolic compounds. कौन से phenolic compound? एसिटोसिरेंजोन एंड हाइड्रोक्सी एसिटोसिरेंजोन, जो कि रिलीज होते हैं जब प्लांट में एक फिजिकल इंजरी आता है. उसके बाद जो Vir A प्रोटीन होता है वो एक और प्रोटीन से इंटरैक्ट करता है, दैट इज द CHVE जीन विच इज प्रेजेंट ऑन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, जो कि इंपॉर्टेंट होता है शुगर को इंड्यूसर से बाइंड करने के लिए. नाउ उसके बाद में जो फिनोलिक कंपाउंड रिलीज हुआ है एंड द शुगर इंड्यूसर्स जो हैं वो मिलके क्या करते हैं, ऑटोफॉस्फोराइलेट करते हैं विर ए को. विर ए ऑटोफॉस्फोराइलेट होता है, उसके बाद वो फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर कर देता है किसे, विर जी को. एंड आफ्टर फॉस्फोराइलेशन विर जी इज एक्टिवेटेड. इट मीन सबसे पहले विर ए एक्टिवेट हुआ, then it activated the Vir G. What Vir G will do? We have saw that Vir G protein act as a transcriptional activator of other Vir genes. It activates the promoter of other virulence gene, and after that Vir D1 and Vir D2, which are nothing but the endonucleases that initiates the transfer process by nicking tDNA. यानी जो left border right border है वो वहाँ पे nick
क्रिएट करते हैं बिटवीन द थर्ड एंड द फोर्थ बेस ऑफ द बॉटम स्ट्रैंड ऑफ ईच 25 बेस पेयर रिपीट्स। सो एंडोन्यूक्लियस यानी कि सबसे पहले बॉर्डर को निक करना पड़ेगा ताकि वो रिलीज हो वहां से। एंड आफ्टर दैट vir e2 is a 69 kilodalton protein that binds single stranded DNA and is involved in transporting tDNA in plant cell nucleus. And after that vir b are essential for virulence, so it forms a conjugal pore or pilus structure in the membrane through which tDNA is delivered into the plant cell। यानी vir b जीन क्या करता है, डिलीवर कराने के लिए क्या बनाता है, कॉन्जुगेशन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और पिलस बनाता है। यू हैव टू रिमेंबर इट। एंड ट्रांसपोर्ट के लिए ये काम आता है। एंड अगर डी की बात करें तो ये क्या है, ये है एंडोन्यूक्लियस। एंड विर एच की बात करें तो विर एच क्या है, इट हैज़ रोल इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सर्टन प्लांट कंपाउंड्स दैट माइट एडवर्सली इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। यानी ये क्या करता है, ये डिटॉक्स करता है ताकि बैक्टीरिया का ग्रोथ जो है उसमें कोई हिंड्रेंस ना आए। नाउ विर एफ क्या करेगा, विर एफ प्ले अ रोल इन tDNA डिलीवरी रादर देन सिम्टम फॉर्मेशन। tDNA के इसमें इसका रोल है डिलीवरी में। प्रेजेंस ऑफ विर एफ जीन इन ऑक्टोपाइन टी स्ट्रेन मेक देम वास्टली सुपीरियर इन ट्रांसफरिंग DNA, यानी कि ट्रांसफर में इसका रोल है tDNA ट्रांसफर में। सो इतनी सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, तो पूरे ही चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए जो भी मैंने पढ़ाया है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी एंड ऑलरेडी मैंने इसके क्वेश्चंस कराए हैं। आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ दैट वीडियो, यू कैन सी इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।